हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यस आज हम लोग हाँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। यस मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव, मीनिंग, कंपोजिशन, पावर, रोल्स एंड लिमिटेशंस। Union executive consists of the president, the vice president, the prime minister, the council of ministers, and the attorney general of India. The union executive is composed of the president, the vice president, the prime minister, the council of ministers, and the attorney general of India. Part 5 of the Indian Constitution contain Article 52 to 78. यानी भारत की जो कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल से मिलकर बनती है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक जो कि कार्यपालिका से संबंधित है, भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है जो नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका का प्रावधान करती है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के संवैधानिक और कानूनी प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं जिसके पास वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। सरकार का ये संसदीय जो स्वरूप है वो संविधान के अनुच्छेद 74 में निहित है। हम लोग पढ़ रहे हैं आज भारत की कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल शामिल होते हैं। अब बात करेंगे कि कार्यकारी के प्रकार कौन कौन से हैं। तो कार्यपालिका सरकार के 3 अंगों में से एक है। अन्य दो है वो है विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है नियम कानूनों को बनाना, जिसमें आपकी संसद आती है। न्यायपालिका काम है जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो संविधान है उसकी रक्षा करना। विधायिका के द्वारा जो कानून है उसको चेक और बैलेंस करने का काम न्यायपालिका का है। और कार्यपालिका का काम है कि जो विधायिका ने कानून बनाए हैं उनको लागू करवाने का काम एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा अपनाए गए कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है और नीति निर्माण में भी संलग्न रहती है। कार्यपालिका के आधिकारिक पदनाम देश दर देश शासन प्रणाली के प्रकार के आधार पर भिन्न होते हैं। जैसे आप देखोगे, पहला संसदीय प्रणाली। इस प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। अधिकांश संसदीय प्रणालियों में राष्ट्रपति या सम्राट जो होता है वो नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है। ऐसी प्रणाली में राष्ट्रपति या सम्राट की भूमिका मुख्य रूप से औपचारिक होती है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के साथ मिलकर प्रभावी शक्ति का प्रयोग करता है। संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी शाखाओं के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देती है। इस प्रणाली में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जिससे विभिन्न संवैधानिक साधनों के माध्यम से उनकी गतिविधियों की जांच और पूछताछ की जा सकती है। जैसे संसदीय जो प्रणाली होती है वो कौन कौन से देशों में है? जर्मनी, इटली, भारत, जापान, यूनाइटेड किंगडम, ऐसे देश इसमें शामिल हैं। अब बात करें तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की या राष्ट्रपति प्रणाली की। इस प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य के प्रमुख होने के साथ साथ सरकार का भी प्रमुख होता है और राष्ट्रपति का जो पद होता है वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से बहुत ही शक्तिशाली होता है। ये जो होता है कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। शक्तियों का पृथक्करण का मतलब होता है कि जो कार्यपालिका है और विधायिका होगी, इसके बीच में जो शक्तियाँ होंगी वो डिवाइड होंगी। यानी कार्यपालिका विधायिका में किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगी और विधायिका कार्यपालिका में किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगी। इस प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका विधायिका के नियंत्रण से स्वतंत्र होती है।
फॉर एग्जाम्पल देखें तो इस प्रकार की प्रणाली वाले देशों में सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा आता है ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश उसमें शामिल हैं। अब बात करेंगे अर्धराष्ट्रपति प्रणाली की। ये दोहरी कार्यकारी प्रणाली है और जिसमें संवैधानिक जो संविधान होता है वो लोकतांत्रिक रूप से कह सकते हो निर्वाचित राष्ट्रपति और संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें आप देखोगे तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल दोनों को नामित करता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को दोनों को नामित करता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे तो इसमें अमेरिका, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश शामिल हैं। अब बात करेंगे भारत का जो कैसा है, भारत की केंद्रीय कार्यकारिणी की संरचना कैसी है, क्योंकि आपको भारत में रहना
इसके अर्थ, संरचना, इसकी शक्तियाँ, भूमिकाएं, सीमाएं, सारी चीज़ें समझ में आई आपको? आई होप. अब so next lecture will be federalism. Federalism in India, polity, significance and its features. Federalism is the division of power between a central authority and various constituent units such as state. What is federalism? Federalism refers to a system of government in which power is divided between a central authority and various constituent units such as state or provinces. In India, the Constitution divides powers and responsibilities between the central government and the state government. The division of power is further enhanced by a third tier of a government, the local self-government. Federalism in India allows for both national unity and regional diversity, as it follows the central government in India, the constitution divides powers and responsibilities between the central government and the state governments. The division of powers is further enhanced by a third tier of government, the local self-government. Federalism in India allows for both national unity and regional diversity, as it allows the central government to implement policies that apply uniformly throughout the country, while also allowing the states to tailor policies to meet the specific needs of their regions. What are the general characteristics of federalism? First one is division of power. Federalism divides power between a central government and regional government, with each level having its own specific responsibilities and areas of authority. Second is supremacy of constitution. Federalism is based on a written constitution that defines the powers and responsibilities of the central and regional governments and established a system of check and balance to ensure that neither level of government becomes too powerful. Next one is independent judiciary. Federalism typically includes an independent judiciary that can interpret the constitution and resolve disputes between different levels of government. Next one is bicameral legislature. Federalism often features a bicameral legislature with one chamber representing the people and the other representing the regional governments. Next one is flexibility. Federalism allows for flexibility in the sharing of powers between central and regional governments and allows for adjustment as circumstances change. Next, we will discuss about how did federalism evolve in India over time. So, federalism in pre-independent India. The current federal system in India has its roots in the Simon Commission Report 1930. The support for the federal form of government for India gained further strength during the first round table conference in 1930. At the close of the conference, the British government officially accepted the principle that form of the new government of India was to be an all India federation embracing British India and the princely states. Later, the Government of India Act 1935 set forth the major outlines of the federal system of government as finally evolved by the Constituent Assembly, which framed the present Constitution of the Republic of India. In the end, the implementation of the provisions of the Act
dealing with federalism was never achieved and did not become operative. However, the provision dealing with the provinces were placed in operation and become effective in 1937. The Constituent Assembly, which convened in 1946, officially endorsed the principle of federalism as the structure of the new India when it supported the resolution offered by Pandit Nehru, which supported the idea of a strong autonomous province and relatively weak center. Later, this concept was altered upon the recommendation of the Union Powers Committee, which recommended that the residuary powers of government be vested in the center rather than in the state. Therefore, at the time of independence in 1947, India was a highly centralized and unitary state, with the central government holding most powers and the states having very limited autonomy. Then, federalism in post-independent India. In the 1960s and 1970s, federalism in India faced several challenges, including the rise of regional and linguistic identity politics, which led to the creation of new states and the emergence of powerful regional parties. This period also saw the proclamation of national emergency and the central government's intervention in state affairs through the imposition of the president rule and the use of financial incentives and sanctions to influence state policy. In the 1980s and 1990s, the decentralization of powers and the devolution of financial resources to the states became an important policy goal, and several initiatives were undertaken to empower the state and strengthen federalism. The 73rd and the 74th of the constitutional amendments were an important step in this direction. However, this process has not been without challenges, and there have been tensions between the central and state governments on issues such as revenue sharing and the allocation of resources. In recent years, federalism in India has faced additional challenges, including the COVID-19 pandemic, which has highlighted the importance of coordination between the central and state government in responding to crisis and addressing the needs of the people. What is the significance of Indian federalism? The first one is accommodation of diversity. Federalism in India allows for the accommodation of diversity by giving autonomy to states to govern their own affairs and address their unique needs and concerns. Second one is effective governance. A robust federal structure needs to be in place to deliver effective governance and ensure that the diverse needs and interests of the states are represented in the decision making process. Third one is promotion of democracy. Federalism promotes democracy by ensuring that power is decentralized and shared between different levels of government. This allows for greater participation and representation of citizens in the decision making process. Next one is protection of rights. Federalism allows for more robust protection of individual and minority rights. Our state governments are better able to address the specific needs and concern of their diverse population and can tailor policies and legislation accordingly. Next, we will discuss about what are the federal provisions under the Indian Constitution. So, Indian Constitution established dual polity. Article 1 read with the Part 5 and Part 6, and the division of powers between them. Article 246 read with the 7th schedule. The state have the same authority over the state list during ordinary times
as the Union has over the Union list. Part 6 of the Indian Constitution provides for the state of the Indian Union with independent constitutional existence. So Article 79, Article 131, Article 246, Article 368. India, that is Bharat, shall be a union of state. This is Article 1. Alright. So I want to finish this lecture, and I am getting very tired and low. So I will discuss these other chapters tomorrow. So today this lecture will be ended. Thank you. Bye bye. Good night.